practice MCQs. I hope you can see them on the screen. I forwarded the invite in a group, and I was getting a feedback that now since 2024, CPSP has started TOS. TOS is again the similar kind of MCQs, so itna bahut zyada confused now. उसमें the only difference is कि एक scenario और उसके ऊपर subsequent MCQs, and there is a possibility of SEQ as well. But I don't think so कि in past exams you had any of those. But even if those comes in, the statements related to the MCQs usually stay the same. So it won't be a problem for you people. So you can still attempt them as an MCQ. So the basic task remains the same. I want to make sure that you understand these. I was asking various residents if these things are helpful or not. So most of the people said to me that they are helpful. So I thought that I should continue with them. I hope there won't be any problem. But अगर आप लोगों को किसी स्टेज पे ये फील हो कि ये ठीक नहीं है, हमें कुछ और करना चाहिए, तो just let me know and I will try to do that. Okay, we'll be starting from the first MCQ. The MCQ, whosoever wants to respond, that will be fine for me. आप लोगों की तस्वीर नहीं आ रही, so don't hesitate to respond. कोई पकड़ दकड़ नहीं है, right? Be relaxed and comfortable. A 10-year-old child has a significant difficulty with reading, writing, and basic arithmetic compared to peers. He also struggles with everyday tasks such as dressing independently and managing simple instructions. His IQ is measured at 60. Which of the following is the most appropriate diagnosis? Number 1, specific learning disorder. Number 2, ADHD. Number 3, mild intellectual disability. Number 4, autism spectrum disorder. Number 5, borderline intellectual functioning. So what do you think is an appropriate answer? Anybody? सर एमसीक्यू वैसे थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसमें अब वो Like, आईक्यू जिस तरह से है वो आप माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला वो वाला भी एलिमेंट है और स्पेसिफिक लर्निंग वाला भी एलिमेंट है IQ जब आप बोलते हैं तो कितने पे माइल्ड होता है? सर आई थिंक ये जो है So 60 normal to IQ is 100. 100 से कितना नीचे हो तो हम फिर भी उसको नॉर्मल में लेते हैं, रेंज में. मेरा ख्याल है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होती हैं यानी 30 कम हो ना. So 70 तक, 70 to 130 is normal, right? अगर आप 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें. 90 to 110 की रेंज होती है ना तो उसमें 60 तक आई थिंक बॉर्डर लाइन होता है उससे नीचे जो है ना तो फिर माइल्ड होता है 60 to 70 is mild and below 60 is moderate and severe is below 30, right? यस सर मुख्तलिफ किताबों में इसके पैरामीटर्स फर्क हैं, बट जनरली कंसेंसस ये है कि 60 to 80 is mild या 70 is mild, और उससे नीचे अगर आए तो मॉडरेट है, और 30 40 या 30 या 50 या 30 के ऐसी कोई रेंज है उसमें स्फीयर हो जाता है, और 20 से नीचे इज प्रोफाउंड, सो वो तो एब्सोल्यूट लॉस हो जाता है. नाउ considering this definition, he is having difficulty in reading, writing, and basic arithmetic compared to peers. As compared to the peers, the reading, writing, and basic arithmetics are difficult. Also struggles with everyday tasks such as dressing and managing simple instructions.
ये दो चीजें एड अप हुई हैं उसके साथ, और फिर IQ इज 60। सो तीन चीजें इन्होंने मोस्ट बता लाइकली दी। हाँ, माइल्ड आईडी, मोस्ट माइल्ड, लाइकली फॉर सी ऑप्शन। बस फिर वही है जो मोस्ट लाइकली आपको लग रहा है, वही है। जब उन्होंने क्लियरली IQ का फिगर मेंशन कर दिया है और आपको पता है कि जी 60 इज समवेयर अराउंड माइल्ड, तो दैट MCQ इज करेक्ट। माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के बच्चे इंडिपेंडेंटली ड्रेसिंग वगैरह कर लेते हैं। ADHD नहीं हो सकता, क्योंकि एज सच ADHD के सिम्टम्स इन्होंने मेंशन नहीं किए। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर नहीं हो सकता, क्योंकि 10 साल का बच्चा है, और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आमतौर पे 3 से 5 साल में एग्जिबिट हो जाता है क्लियरली। सो उम्र डेफिनेटली डिफाइन कर देती है। बॉर्डर लाइन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, अगर 70 से ऊपर होता तो हम बॉर्डर लाइन पे बोल देते, क्योंकि ये 60 उन्होंने स्पेसिफिक फिगर दी है, इसलिए ये माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, और जो आपको मोस्ट लाइकली लग रहा है वही करेक्ट है। Next question. A 12-year-old intellectually disability has an IQ of 40. He can speak in short sentences and perform simple tasks under supervision. What is the severity? Mild, moderate, severe, profound, borderline. मॉडरेट सर। Moderate. Very good. Shabash. समझ आ गई ना? अब clear हो गया. So there is no difficulty in it. A child has a normal intelligence but marked difficulty in reading and writing despite appropriate schooling. What is the most likely diagnosis? It's a very simple question, right? Normal intelligence, but reading and writing is difficult. What is the most likely diagnosis? Mild intellectual disability, moderate intellectual disability, specific learning disorder, ADHD, ASD. सी ऑप्शन है सर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। गुड, सी स्पेसिफिक। उसने क्लियरली बात की है, नॉर्मल इंटेलिजेंस है, राइट, अप्रोप्रिएट स्कूलिंग है, और डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड राइटिंग है सिर्फ, तो दिस इज स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट, a 4-year child shows global developmental delay. Which of the following is the most appropriate initial step? बच्चा आपके पास आया, 4 साल का है, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले आपको मिल गया, उसने क्रॉल लेट करना शुरू किया, नेक होल्डिंग लेट हुई, बैठना लेट होना शुरू हुआ। सो हम एक चीज से एज्यूम कर रहे हैं कि ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले जब उन्होंने मेंशन कर दिया, मींस कि ये सारी प्रॉब्लम्स के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। सो पहला स्टेप क्या होगा? स्टार्ट एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन, परफॉर्म IQ टेस्टिंग इमीडिएटली, hearing and vision assessment, start stimulant medication, ignore until school age. आप क्या करेंगे? सर सी, हियरिंग एंड विजन असेसमेंट। परफेक्ट, एब्सोल्युटली। पहली चीज बच्चों में जो सबसे पहले देखी जाती है वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट, विच इज वेरी कॉमन, विजुअल इम्पेयरमेंट, चश्मे की जरूरत है, नजर कमजोर है, लेंस का मसला है, वो देखा जाता है। आइडियली स्पीकिंग हमें उसकी प्रॉपर फिजिकल असेसमेंट करवानी चाहिए। हेयरिंग एंड विजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू एनी again other interventions or any other testing. Psychological testing and IQ testing is a complicated process, but checking the vision is relatively an easier job to be done. Hearing difficulties. Lots of children comes to me with difficulty in speaking, कि ये बच्चा बोलता ठीक नहीं है. And the most common cause is tongue tie, which is correctable easily. Even my own son had the tongue tie and we had to get him operated. So tongue tie is a common problem that needs to be corrected, and it is easily manageable. Hearing and vision impairments can make the child have problems, right? So global developmental delay bhi agar hai, to even then hearing and vision assessment is the first step. Which of the following is most common preventable cause of
intellectual disability worldwide? Preventable cause of ID worldwide क्या है? Down syndrome, fetal alcohol spectrum disorder, phenylketonuria, fragile X syndrome, congenital hypothyroidism. हाँ जी, सर बी होगा। सी fetal alcohol, phenylketonuria. नहीं सर, बी बी। B आई fetal एम alcohol कंफ्यूज इन। spectrum disorder. When the word is used preventable, can you prevent Down syndrome, congenital hypothyroidism, fragile X syndrome, or phenylketonuria? Can you prevent them? No, we नो। cannot. The only one thing we can prevent is fetal alcohol spectrum disorder. माओ का शराब पीना बंद कराएं, प्रिवेंशन हो जाएगी, चीजें ठीक हो जाएंगी. गुड, वेरी गुड, शाबाश. A boy has a long face, large ears, macro-orchidism, and learning disabilities, difficulties. What is the diagnosis? Long face, large ears, macro-orchidism, and learning disability. What is the possible diagnosis? Down syndrome, fragile X syndrome, Turner syndrome, Klinefelters, or Williams. थोड़ा मुश्किल है. फ्रेजाइल एक्स, बी। क्या बात है, वेरी नाइस. डाउन सिंड्रोम में फेशियल फीचर्स बड़े स्पेसिफिक होते हैं, मंगोल फीचर्स, राइट. टर्नर सिंड्रोम में भी फेशियल एक्सप्रेशन जरा डिफरेंट होते हैं. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एज सच लोग बड़े होते हैं, लेकिन लॉन्ग फेस और लार्ज ईयर्स के साथ मैक्रो ऑर्किडिज्म नहीं होता, मैक्रो नहीं होता. विलियम सिंड्रोम में अगेन ये तीन फीचर्स में कंबाइन नहीं होते. तो जब ये तीन फीचर्स दिए गए हैं, लॉन्ग फेस, लार्ज ईयर्स एंड मैक्रो ऑर्किडिज्म, देन learning difficulties, the most common is fragile X syndrome. An 8-year-old boy is unable to sit still in class, interrupts frequently, and has declining academic performance. 8 साल का बच्चा है. Symptoms are present at home and school for 1 year. Symptoms are present at home and school for 1 year. What is the appropriate first line treatment? 8 साल का बच्चा है, क्लास में बैठता नहीं है, इंटरप्ट करता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रही है. पहली ट्रीटमेंट क्या होगी? फ्लूऑक्सीटीन, मिथाइलफेनिडेट, रिस्पेरिडॉन, डायजीपाम, बिहेवियर थेरेपी ओनली. एनीबडी? बिहेवियरल थेरेपी सर। ना. मुझे यकीन था कि इस सवाल में जवाब ठीक नहीं आएगा. रीजन बीइंग कि हम पाकिस्तान में इसको ये होता नहीं. हमारे पास जब भी बच्चे आते हैं और वो बैठ नहीं पाते, बार बार तंग करते हैं, उठते हैं, आते हैं, जाते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज होती है, तो हमारे दिमागों में अनफॉर्चुनेटली जो पहली चीज आती है वो ये आती है कि बच्चे को या कंडक्ट डिसऑर्डर है, या बच्चे को एडी कुछ और मसला है. लेकिन मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस इस हिसाब से इज एडीएचडी. 8-year-old boy, 7 साल से उम्र में बड़ा है, अनेबल टू सिट स्टिल इन द क्लास, बैठ नहीं रहा टिक के, बार बार फ्रीक्वेंटली इंटरप्ट करता है, और उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रही है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही, डिक्लाइन हो रही है. उसकी उन हरकतों की वजह से उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज हो रही है. देन द बेस्ट पॉसिबल आंसर इज मिथाइलफेनिडेट. अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मिथाइलफेनिडेट पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, इसलिए लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते. फर्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट? क्वेश्चन इज वेरी स्पेसिफिक. आप पीछे वाली स्टेम को देख के
बाकी जो दरमियान वाली चीजें हैं छोड़ दें, उसकी असेसमेंट हुई कि नहीं हुई, उसमें बाकी चीजें हुई कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू बड़ा स्पेसिफिक तौर पे टारगेटेड पूछ रहा है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मींस कि उन्होंने पीछे दरमियान में असेसमेंट कर ली है, डायग्नोसिस स्टैब्लिश कर लिया है, जो चीजें रूल आउट होने वाली थी वो हो गई हैं। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इज मिथाइलफेनिडेट, जो अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान में नहीं देते। दिस इज अ वेरी कॉमन स्ट्रैटेजी विच इज यूटिलाइज्ड हियर। ओके, नेक्स्ट। A 6 year old girl refuses to go to school, cries when separated from her mother, and fears something bad will happen to her parents. Symptoms have lasted 2 months. What is the most likely diagnosis? GAD, separation anxiety, social anxiety, panic disorder, school refusal disorder. क्या है? separation anxiety disorder. separation वेरी anxiety गुड, disorder. वेरी गुड। सो नो कॉम्प्लिकेशन हेयर। 6 साल की बच्ची है। बच्ची अगर 3 साल की होती तो डायग्नोसिस चेंज हो जाता। बच्ची अगर 12 साल की होती तब भी डायग्नोसिस चेंज होता। लेकिन जब स्पेसिफिकली उन्होंने 6 साल की बच्ची लिखी है और उन्होंने कहा व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम मदर शी क्राइज, राइट? सो दिस इज अ सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। अगर ये बच्ची 12 साल की होती और रोती माँ से अलग होते हुए तो मेरा डायग्नोसिस डिफरेंट हो जाना था। और यही बच्ची अगर 3 साल की होती और माँ से सेपरेट होते हुए रोती स्कूल जाते हुए तो मेरा डायग्नोसिस डिफरेंट हो जाता। वैसे 3 साल के बच्चे पाकिस्तान में स्कूल जाते भी नहीं है। सो दैट्स अनदर स्टोरी। A 9 year old boy with a diagnosis of ADHD is started on methylphenidate. आपने मिथाइलफेनिडेट की कोई भी नाम की प्रेपरेशन शुरू करा दी है। After 2 weeks, his teacher reports improvement in attention, but parents note he is not sleeping and has a decreased appetite. So, आमतौर पे Ritalin, जो मिथाइलफेनिडेट, जितनी भी स्टिमुलेंट्स मेडिकेशंस हैं, दे कॉज इंसोम्निया and they cause reduced appetite. This is the first thing that we usually ask the parents when the child is on a stimulant, that is he losing his appetite? Is he losing his weight? Is he able to sleep properly? And most of the patients, people say no. So, what is the best next step? Stop medication immediately, switch to fluoxetine, reduce dose or adjust timings, add risperidone, ignore the side effects. क्या होगा? Three Reduce dose options or है, reduce adjust dose और timing. adjust time. क्या बात है, आप लोग तो माशाल्लाह मास्टर हो गए। वेरी गुड। या शायद मेरे एमसीक्यूज बड़े हल्के हैं। ओके, वेरी नाइस। दिस इज द राइट आंसर। यस। An 8 year old girl presents with new onset bedwetting after being dry for 3 years. 8 साल की बच्ची है। 5 साल पे उसको बेड वेटिंग शुरू हुई थी। 8 साल 3 साल के बाद दोबारा शुरू हो गई। She has become withdrawn and her school performance declined. Physical exam is normal. What is the most appropriate next step? Desmopressin, reassurance, evaluate for psychosocial stressors, punishment strategy, fluid restriction. क्या करेंगे? Evaluation for psychosocial stressors. जिंदाबाद। आप लोग तो बड़े सही जा रहे हैं आज। वेरी नाइस, गुड। Yes, that is the correct answer. We don't start any medications till the time the assessment is complete. And in children, most of the time, we have to go for the psychosocial stressors. घर का माहौल कैसा है, माँ बाप की लड़ाई कितनी होती है, मारपीट कितनी होती है, फिजिकल अब्यूज है कि नहीं है, इस तरह की बहुत भी सारे एनवायरमेंटल क्यूज। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। एंड सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड इशू है वो सेक्सुअल एंड फिजिकल अब्यूज है, उसकी असेसमेंट करना बहुत जरूरी होती है। A 5 year old child is diagnosed with ID. There are dysmorphic features and a family history of similar problems. What is the most appropriate next step? Brain MRI, genetic testing, EEG, start medication, no further evaluation.
Anybody? जेनेटिक Test. टेस्टिंग वेरी गुड। दूसरे क्या बोल रहे थे आप? किसी ने कुछ और भी बोला था। सिर्फ दोनों नहीं जेनेटिक टेस्टिंग बोल रहा था। गुड। MRI. जेनेटिक टेस्टिंग। अनफॉर्चुनेटली द जेनेटिक टेस्टिंग इन पाकिस्तान, मैं बड़ी अरसे से कोशिश कर रहा हूँ, there are multiple laboratories available who do the genetic testing. पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एक डिपार्टमेंट है, वहां पे भी जेनेटिक टेस्टिंग होता है। प्लस यूएचएस में भी एक लैब है, वो भी जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। कई और जगहों पे भी जेनेटिक टेस्टिंग अवेलेबल है, बट दे आर नॉट ओपन फॉर एवरीबडी. They are mostly at the level of the research based, which surprises me because genetic testing unfortunately हो जानी चाहिए शुरू पाकिस्तान में. Micro array for genetics is the test that we do for most of these individuals. Intellectual disability है, dysmorphic features हैं, family history है. तीन बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और इसके बेसिस पे जेनेटिक टेस्टिंग होना जरूरी है. माइक्रो रे फॉर जेनेटिक्स का टेस्ट है, फ्री होता है यहाँ पे पाकिस्तान में. इट कॉस्ट अबाउट 300,000, लेकिन स्टिल अगर हो जाए तो इट्स अ पॉसिबिलिटी. वंस द जेनेटिक सिंड्रोम इज अगेन रूल्ड आउट, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड विद अदर स्टफ. ओके, नेक्स्ट ये डॉक्टर क्वेश्चन. साहबा ने एमआरआई बोला था कि उसमें सर डॉक्टर साहबा ने एमआरआई बोला था, तो वो क्यों नहीं है जवाब, वो जरा उनको बता दें. ओके, ब्रेन एमआरआई यूजुअली अगेन पॉसिबिलिटी है, करवाना चाहिए. मैं करवाता हूं अपने सारे पेशेंट्स का ब्रेन एमआरआई जो इस एज पे हों, लेकिन उसमें तीन मसले हैं. जेनेटिक टेस्टिंग में थोड़ा सा ब्लड सैंपल लेना है, बच्चा ब्लड टेस्ट आराम से इतना सा दे देता है, रोता पीट रहा है, इसमें 5 साल का है, उसको पकड़ के ब्लड ले लिया जाता है. एमआरआई में 5 साल का बच्चा 1.5 घंटे के लिए स्टैंड स्टिल नहीं हो सकता, बिल्कुल सीधा लेटना पड़ता है विदाउट एनी मूवमेंट. राइट, सो एक मुश्किल टेस्ट है, और फिर अंडर सेडेशन या अंडर एनेस्थीसिया आपको एमआरआई करना पड़ता है. सो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व है. जेनेटिक टेस्टिंग अगर अवेलेबल हो, इट्स द मोस्ट इजिएस्ट थिंग टू बी डन एंड मोस्ट रेलेवेंट एज वेल. जब आपको एक चीज नजर आ गई है कि 5 साल का बच्चा है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और डिसमॉर्फिक फीचर्स भी हैं और फैमिली हिस्ट्री भी है, तो तीनों चीजें किसी ऐसे डिसऑर्डर को पॉइंट आउट कर रही हैं जो प्रॉब्ली इनहेरिटेंस में आ रहा है, और इनहेरिटेंस में बहुत सारी चीजें आती हैं. अगेन इस पे एक बहुत लंबी डिस्कशन है. क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज are very common cause of intellectual disability, which unfortunately in Pakistan is never seen or heard, which is surprising. So यहाँ पे हम, because डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज के हम पेशेंट सारे देखते हैं, तो हम पहली चीज माइक्रोरे फॉर जेनेटिक्स कराते हैं, ताकि हम जो ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो जेनेटिक बेसिस पे आ रहे हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हैं, उनको देख लें. अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो हमें एक वो बड़ी प्रिसाइज रिपोर्ट और फ्यूचर इंडिकेशन देते हैं. अगर क्रोमोसोम से 22 पे एबनॉर्मेलिटी है, तो मुझे वो डिटेल्ड रिपोर्ट में सारा कुछ बताते हैं कि इस उम्र में इसको कार्डिक प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, इस उम्र में इसको डायबिटीज होने के चांसेस हैं, इस उम्र में इसके साथ ये होगा, और इतना लाइफ स्पैन उसका एक्सपेक्टेड हो सकता है. सो दे आर सो प्रिसाइज, and that is a very good actually break for me, because I know what I have to do in times to come. So it's relatively is a better situation, right? सुन रहे हैं ना आप लोग? सॉरी फॉर द इंटरप्शन. क्लियर होगी बात? जी सर. ओके, आगे चलेंगे. व्हाट इज द बेस्ट एक्यूट फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट? सॉरी, STEM is a 10-year-old boy with ASD becomes severely aggressive and is a danger to others. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है और एग्रेसिव है, कौन सी दवाई देंगे? फ्लुओक्सिटीन, रिस्पेरिडॉन, मिथाइलफेनिडेट, लिथियम, साइकोथेरेपी ओनली? रिस्पेरिडॉन. Risperidone. Risperidone is relatively safe, old drug now. It's been now more than 35, 40 years to risperidone.
Lots of studies are there for the safety in children, although still we don't consider it to be a very safe drug, but it is one of the options to manage the aggression in people with autism spectrum disorder. ये commonly पाकिस्तान में prescribe होती है, but I always have a query, okay, why not everything else is done before prescribing the medication, assessment and etc. thing. Okay, next question. Which of the following is an example of specific learning disability? Mental retardation, dyslexia, ADHD, ASD, oppositional defiance disorder. Dyslexia, sir. Dyslexia. Good. यार तुम लोगों को जरूरत नहीं है ऐसे रिवीजन की, ठीक है? दिस इज परफेक्टली फाइन. यस, डिसलेक्स मेंटल रिटार्डेशन इज अ ग्लोबल थिंग. वो स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज में नहीं आता. एडीएचडी इज अ डिफरेंट डायग्नोस्टिक कैटेगरी. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स में अगेन ग्लोबल प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पेसिफिक नहीं होती. और ऑपोजिशनल डिफाइंस डिसऑर्डर में लर्निंग डिसेबिलिटी का ऐसा ताल्लुक वास्ता हो सकता है, बट ऐसा डायरेक्ट वो प्रॉब्लम नहीं. सो इट इज एक्चुअली डिसलेक्सिया, राइट? Okay, next question. Reading disorder is a developmental disorder and is characterized by reading achievement, for example, accuracy, speed, and comprehension. So, if reading disorder की बात करते हैं, these three things are actually the basic steps to understand. Whether he is accurate, his speed is fine, or comprehension, understanding is there or not. Being significantly below standard is expected for which of the following? Chronological age, IQ, schooling experience, all of the above, none of the above. सवाल की समझ आई है? Being significantly below standards expected for which of the following? Reading disorder, developmental disorder, characterized by reading achievements, for example, accuracy, speed, and comprehensions. What is actually here which signifies, yes, this can help or this cannot help? Anybody? It's not a difficult question, it's an odd question. All of the above. Nope. और IQ नहीं होगा. IQ भी नहीं होगा. IQ में सिर्फ रीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं होगा ना. रीडिंग डिसऑर्डर इज अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर. Chronological age. नोप. अब तो एक ही रह गया. एक ही रह स्कूलिंग गया फिर. एक्सपीरियंस. Schooling experience is the most important function, right? जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं रीडिंग राइटिंग के, उनमें स्कूलिंग मैटर्स अ लॉट, बिकॉज उसमें स्कूल अगर अच्छा है then they can make the child understand, they spend more time on the child, they make the child, give them the child more time to finish up the job, they focus more on their accuracy and speed, and they try to make him understand it as well. So schooling matters a lot. अगर आप लर्निंग डिफिकल्टीज के बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में डालें जहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही हो, तो ही कैन पिक अप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. Like dyslexic children can do very well after passing certain age if they are supported well. If they are not supported well, then things do get complicated, right? So good schools are the standard for this. Okay. Further, a 9-year-old student with an average intelligence struggles significantly with reading, comprehension, decoding unfamiliar words, and spelling despite receiving a regular classroom instruction. The student often avoids reading aloud and feels anxious during reading tasks. What is the most likely specific learning disability? Dysgraphia, dyscalculia, dyslexia, nonverbal learning disability, auditory processing disorder. ये तो इतना मुश्किल नहीं. Anybody?
सारी चीजें इंपॉर्टेंट है स्टेम में। 9 साल का बच्चा है तो छोटा नहीं है, राइट। 9 साल का बच्चा है, एवरेज इंटेलिजेंस है, मींस आईक्यू उसका 80 और 100 के दरमियान है, ठीक है। और problem with reading comprehension, decoding unfamiliar words and spelling, despite receiving a regular classroom instruction. वो कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डिकोडिंग अनफेमिलियर वर्ड्स, स्पेलिंग डिस्पाइट रिसीविंग रेगुलर क्लासरूम। तो क्या प्रॉब्लम है? अभी पिछले एमसीक्यू में इसकी बात हुई, अब तो हाँ, डिसलेक्सिया, यस, ओके। मैंने कहा इतना मुश्किल नहीं था, थोड़ा कंफ्यूज आप लोग हो गए। अकॉर्डिंग टू DSM-5, अब आइडियली मुझे ICD-11 का पूछना चाहिए था, मैंने DSM-5 लिख दिया, एक ही बात है। When clinician identifies a student with persistent difficulties in the word recognition, decoding, and spelling, what is the official diagnostic term used and how is the term dyslexia addressed? 1. Dyslexia. 2. Specific learning disorders. C. Reading disorders. D. Phonological process disorders. E. Specific learning disorders with impairment in written expression. क्या करेक्ट है? I think B है, specific disorder with impairment in reading. अभी पीछे बात हो रही है, दानिश थोड़ा सा पीछे फोकस करो। Student identified with persistent difficulties in word recognition, decoding, and spelling. A is the correct answer. Dyslexia, it remains the primary diagnostic label for all reading-based difficulties. No, sorry. 9. You are right. Specific learning disorder with impairment in reading, dyslexia may still be used as a descriptive term for this pattern of difficulties. You are right. Sorry, I mixed it. But it is specific learning disorders with impairment in reading, or you can still use the term dyslexia. Both are correct. Very good. आज तो मुझसे भी ज्यादा होशियार हो गए बच्चे. Good. To meet the diagnostic criteria for specific learning disorder, SLD, according to ICD-11, for what minimum duration must an individual demonstrate persistent learning difficulties despite the provision of targeted interventions? SLD, ठीक है, ICD-11 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कब पूरा हो रहा है? टाइम ड्यूरेशन पूछी जा रही है, कितनी देर ये चीज परसिस्ट करे तो आप लेबल कर देंगे कि इसको SLD है। 6 months, 12 months, 18 months, 2 years, there is no minimum duration as long standardized test scores are low. No minimum Anybody? duration. No minimum duration. Okay, no minimum duration. Anybody else? You are right. There is no minimum duration. अगर आपने ये लफ्ज बोल दिया है ना कि provision of specific learning disorders according to ICD for what minimum? The must demonstrate persistent learning disabilities despite the provision of targeted interventions. जब आप ये लफ्ज बोल देते हैं तो कोई मिनिमम ड्यूरेशन नहीं है, right? Okay. Next, in the clinical assessment of a child suspected of having a specific learning disorder, SLD, which of the following scenarios serves an exclusionary criteria that would prevent a formal diagnosis of SLD under the DSM-5? The student is concurrently diagnosed with ADHD and demonstrate poor focus during testing. The student has a history of high academic achievement but is now struggling with the complex high school math. The student has confirmed uncorrected visual impairment and prevents clear sight of the text. D. The student exhibits marked difficulties in multiple academic areas such as reading and math. And E.
the student standardized test scores are exactly 1.5 standard deviation below the mean of their value. SLD, which of the following serves as exclusionary criteria? What do you think? What is the correct? Anybody? I know this is Sir, I difficult think because D. the student has a confirmed uncorrected visual impairment that prevents clear sight of the text. Yes, sir. Is it an exclusion criteria? The student is concurrently diagnosed with ADHD and demonstrate poor focus during testing. ADHD का diagnosis हो जाए तो SLD नहीं हो सकती simultaneously. दूसरा है कि student has a history of high academic achievement but now is struggling with the complex high school math, सिर्फ maths. The student has a confirmed uncorrected visual impairment. The student exhibits marked difficulties in multiple academic areas such as reading and math. The student has standardized test scores exactly 1.5 standard deviation below the mean of their age. आपने क्या बोला था? मैंने सी बोला था। उसमें अब देखते हैं, जैसे हम कहते हैं ना डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में, तो ऑब्वियसली मेडिकल या न्यूरोलॉजिकल जो कॉजेज हैं वो तो पहले रूल आउट करने होते हैं। बिल्कुल सही है, आप ठीक कह रहे हैं। आई एग्री विद यू, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, लो जी, अब आ जाएं एंजाइटी डिसऑर्डर्स पे। आई नो एंजाइटी डिसऑर्डर्स आप लोगों के ज्यादा अच्छे होंगे, सो ये इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन थोड़े लंबे हैं। सॉरी, मैं फिर तेज तेज पढ़ूंगा, लेकिन आप लोग साथ साथ पढ़ते रहें। A clinician is evaluating a patient to differentiate between GAD and OCD. The patient reports spending several hours a day trapped in their own head with repetitive, intrusive thoughts. Which of the following clinical observation most strongly supports a diagnosis of GAD over OCD? The patient describes the thoughts as intrusive, alien, and inconsistent with their self image. The thoughts are accompanied by ritualistic mental counting or symmetrical arranging to neutralize distress. The patient perceives their thoughts are as excessive but focuses primarily on various real life circumstances such as health, finances, or family safety. GAD involves ego-syntonic worries about real life concerns, while OCD involves ego-dystonic thoughts that are often perceived as irrational. The patient recognizes that the thoughts are product of their own mind rather than being imposed from an external source. थोड़ा complicated है, but इतना मुश्किल नहीं है. Anybody? That is most probably D. D? GAD involves ego-syntonic worries about real life. Absolutely, absolutely. This is the correct answer. GAD involves ego-syntonic worries about real life concerns, while OCD involves ego dystonic thoughts that are often perceived as irrational. So D is the correct answer. Next. ये थोड़े लंबे हो गए सारे. A patient with GAD is started on SSRI. During the first 2 weeks of treatment, the patient reports a paradoxical increase in jitteriness and anxiety before experiencing a therapeutic relief around week 4. Which neurobiological mechanism best explains this delayed onset of therapeutic action at the initial transient worsening of symptoms? Immediate saturation of GABA A receptors leading to rebound excitability, acute blockade of dopamine reuptake in the mesolimbic pathway, initial desensitization of 5-HT1A autoreceptors in Raphe nuclei, direct stimulation of H1 histamine receptors causing psychomotor agitation, immediate downregulation of post-synaptic beta adrenergic receptor. ये तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. C option है सर। कौन सा है? C. C initial C. desensitization. C ही है.
बात हो रही है SSRIs की। नीचे जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स मेंशन किए गए उसमें सिर्फ एक स्टेम में SSRI की बात हो रही है। पहले में वो गाबा की बात कर रहा है, दूसरे में वो डोपामीन की बात कर रहा है, तीसरे में वो हिस्टामीन की बात कर रहा है, चौथे में वो बीटा ब्लॉकर्स की बात कर रहा है। एक्चुअली SSRIs क्या करती हैं? इनिशियल डिसेंसिटाइजेशन ऑफ 5-HT1A ऑटो रिसेप्टर्स इन द राफे न्यूक्लियाई। वो SSRIs वहां पे जाके ऑटो रिसेप्टर्स को शट डाउन करने में टाइम लेते हैं, इसलिए उनको पहले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते में प्रॉब्लम्स होती हैं, इंप्रूवमेंट नहीं होती। जब वो ऑटो रिसेप्टर्स शट डाउन हो जाते हैं तो उनका थेराप्यूटिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। और इजिएस्ट आंसर ये है कि SSRI ऊपर लिखे हुए और नीचे SSRI सिर्फ एक स्टेम में मौजूद है। So that is the correct answer. Okay, next. A 35-year-old lawyer experiences overwhelming physical symptoms, including heart palpitations, trembling hands, crackling voice, exclusively when presenting arguments in open court or professional galas. However, the lawyer is perfectly comfortable in one-on-one client meetings, social dinner parties, and busy office environments. The lawyer is considering a beta blocker to manage these symptoms. According to ICD-11, what is the most accurate diagnostic specifier for this presentation? अब मेन डायग्नोसिस की बात नहीं हो रही, स्पेसिफायर की बात हो रही है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जनरलाइज टाइप, social anxiety disorder performance only, specific phobia situational type, panic disorder with agoraphobia, occupational adaptation disorder. हाँ जी, बी ऑप्शन है सर। क्या बात है। मेरा तो पानी भी छोड़ दिया इसी चक्कर में। आप लोगों के सारों के जवाब ठीक जा रहे हैं। इसमें सिर्फ जब स्पेसिफायर की बात हो रही है ना, एक डायग्नोस्टिक स्पेसिफायर, तो ये जो बाकी सारे नहीं, ये स्पेसिफायर नहीं है। खैर, सोशल एंजाइटी वाला स्पेसिफायर है, लेकिन वो सोशल एंजाइटी की बात कर रहा है और ऊपर उसकी बात किसी और चीज में हो रही है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर परफॉर्मेंस ओनली, राइट, दैट इज अ स्पेसिफायर अकॉर्डिंग टू ICD-11। अगर आप पढ़ें तो इट्स एन इजी आंसर। A psychiatrist is deciding between several first-line antidepressants for a patient with GAD. The patient has a history of pre-existing cardiac arrhythmias and is highly concerned about avoiding weight gain. Which two SSRIs should psychiatrists be most cautious about prescribing due to their respective disproportionate risk of QT prolongation and weight gain? SSRIs में से कौन सी दो वेट गेन और QT प्रोलोंगेशन करती हैं? Escitalopram, fluoxetine, sertraline, citalopram, fluoxetine, escitalopram, citalopram and paroxetine and sertraline. citalopram और paroxetine. Very good. जरूरत नहीं है मुझे आपको मेरी, वैसे जवाब सही है। ये दोनों क्यूटी प्रोलोंगेशन भी करती हैं और वेट गेन भी करती हैं। फ्लुओक्सेटिन, escitalopram, fine. Sertraline and citalopram, well, can be given because ये दोनों मैच नहीं कर रही। इसने एक कर रही है और एक नहीं कर रही, इसमें दोनों नहीं कर रही, और इसमें paroxetine और sertraline में भी एक कर रही है, एक नहीं कर रही। Sertraline is considered to be a safe, escitalopram is considered to be safe, but citalopram and paroxetine both can cause QT prolongation and weight gain. A 42-year-old patient being treated for severe anxiety and depression is brought to the emergency department with altered mental state, significant shivering, and diaphoresis after recently starting a second serotonergic agent. On physical examination, the clinician notes hyperreflexia that is more pronounced in the lower extremities. According to the Hunter serotonin toxicity criteria, which specific physical finding is the most sensitive and essential decision rule for confirming a diagnosis of serotonin syndrome? Basically, again, they are asking about the serotonin syndrome diagnostic criteria. Presence of severe lead pipe muscle rigidity and bradyflexia,
elevated phosphokinase levels above 10,000, core body temperature exceeding 40 degrees centigrade, that is 104, presence of spontaneous inducible ocular clonus, the presence of at least 5 symptoms from original Sternbach's criteria. कौन सा है? Sir, D. Ocular clonus. D. Sorry. B. B D. किसने बोला? Ocular आपने, clonus. ओके। और आपने बोला ocular clonus. D. Ocular clonus Ocular is the clonus. Yes, sir. right answer. Yes. Bradyphylaxia नहीं होता, ठीक है? Elevated creatine phosphokinase level above 10,000 initial presentation में जरूरी नहीं कि वहां तक चले जाएं, ठीक है? Body temperature 104 yes हो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता. There is a possibility कि वो मिस हो जाए. लेकिन spontaneous inducible or ocular clonus is the main thing which always will be seen in serotonergic syndrome. Serotonergic syndrome, so you have to be careful about this. Again, a patient with severe serotonin syndrome remains agitated and hyperthermic despite aggressive support care and maximal dose of benzodiazepine. यानी कि serotonergic syndrome में treatment strategy benzodiazepine देना है. The medical team decides to administer a specific pharmacological antidote. SSRIs का antidote दे रहे हैं. Which medication is the most appropriate choice for this scenario and what it is primary action? Dantrolene, bromocriptine, flumazanil, cyproheptadine and physostigmine. कौन सी देंगे? Cyproheptadine. Good. यार आपको तो मेरी जरूरत ही नहीं है. Cyproheptadine, it acts as an antagonist of serotonin 2 receptors to neutralize excessive serotonergic activity. Very good. Cyproheptadine दे सकते हैं. Cyproheptadine पाकिस्तान में किस नाम से आती है? Anybody? नहीं सर, नहीं पता. अच्छा, पता कर लेना, बिकॉज मुझे भी नहीं पता ऑनेस्टली कि पाकिस्तान में वो किस नाम से आती है. सो चेक करके मुझे भी बताना. ओके. अब patient switching from SSRI to Vertoxetine. Vertoxetine तो पाकिस्तान में वैसी अनफॉर्चुनेटली नाकाम हो गई ना लुनबैक के जाने के बाद, ड्यू टू ट्रीटमेंट इमर्जेंट सेक्सुअल डिसफंक्शन. सो SSRI से उसको सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स हो रहे थे. Reports significant improvement in libido and arousal, which specific features of Vertoxetine multimodal pharmacological profile is most likely responsible for its lower risk of sexual side effects compared to SSRI. Vertoxetine sexual side effects नहीं करती. क्यों? एक, नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्ट एंड डोपामीन ट्रांसपोर्टर डैट इनहिबिशन करती. एंटागनिज्म ऑफ serotonin 5-HT3 and 5-HTT7 receptors, which increases downstream dopamine and norepinephrine release. Full agonism of 5-HT2C receptors, direct blockade of H1 histamine receptors, total lack of affinity for SERT. क्या करेक्ट है? सर बी. वेरी गुड. पहला इसलिए नहीं है कि नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन ट्रांसपोर्टर से सेक्सुअल पाथवेज नहीं एड्रेस हो रहे उस सेंस में, और क्योंकि वर्टॉक्सिटिन इज एन SSRI बट it definitely has more receptors where it acts, and 5-HT7 receptors and 5-HT3 receptors are considered to be one of the most targeted receptors, which increases downstream dopamine and norepinephrine release, which are possible causes of sexual side effects of an SSRI. So B is the correct answer. Okay जी, अभी हमारे पास अभी बहुत पड़े हुए. जब थक जाएं तो बता देना, बाद में कर लेंगे. Okay. A 22-year-old patient is referred for psychiatric evaluation due to pattern of high intensity unstable relations.
frequent splitting, viewing others as entirely good or bad, and chronic feelings of emptiness. So most of the symptoms are suggestive of you know what. When asked about the behavior, the patient says, I only act this way because everyone eventually leaves me. It's the only logical way to react. Which personality disorder cluster does the patient likely to fall into, and how is the term egosyntonic applied to this clinical presentation compared to a patient with an anxiety disorder? अब सवाल थोड़ा सा एक स्टेप आगे जा रहा है. आपने पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डायग्नोस कर लिया कि वो क्या है, लेकिन किस क्लस्टर में वो फॉल करेगा कि ईगो सिंटोनिक और एंजाइटी डिसऑर्डर्स दोनों के साथ उसकी प्रेजेंटेशन का कोरिलेशन बने. एनीबॉडी? Yeah. हाँ बोलो शाबाश. See, the symptoms are egosyntonic. Cluster B, the symptoms are egosyntonic, meaning the patient perceives them as appropriate and consistent with their self-image. Zabardast. Very nice. Good. Shabash. Okay. In the treatment of OCD, exposure and response prevention, ERP, is the gold standard. We all know that. However, researchers increasingly distinguish between two major theoretical mechanisms for how it works. A patient with contamination-based OCD touches a dirty surface and over multiply session finds that their anxiety naturally drops during the exposure. While emotional processing theory attributes this success to habituation, a newer model suggests that the treatment success is actually predicted by the patient's ability to tolerate distress and violate their own negative expectations. So अब तीन theories हैं एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन के हवाले से कि एक तो वो कहते हैं जी कि बिटवीन दो मतलब उसमें एक हैबिचुएशन है हो रही है और एक जो है वो उसकी टॉलरेंस डेवलप हो रही है उन चीजों से. तो क्या चीज करेक्ट होगी? Which of the following describes this newer model and its core mechanism? Emotional processing theory, inhibitory learning theory, habituation theory, Panda's hypothesis, and cognitive restructuring. इसको सोचें आराम से फिर जवाब दें. Take your time. This is a relatively difficult question. इसकी अगर स्वेरिटी लगाऊं तो मैं स्वेरिटी इंडेक्स में इसको ऑब्वियसली डिफिकल्टी इंडेक्स इसका हाई होगा. एनीबडी? सभी खामोश हो गए. जी सर. क्यों? मुश्किल है. इसका आंसर है बी. सर ई. नहीं, इसका आंसर है बी, इनहिबिटरी लर्निंग थ्योरी. ऊपर बात देखें आप, जो न्यू मॉडल सजेस्ट कर रहा है वो प्रिडिक्ट ये करे पेशेंट्स एबिलिटी टू टॉलरेट डिस्ट्रेस, उसकी टॉलरेंस बढ़ गई है. सो ये इनहिबिटरी लर्निंग थ्योरी है. इट it says that extinction is achieved by forming new non-threatening associations that complete with the override the original fear memory. पुरानी memories background में जा रही हैं और नई learning हो रही है. इसको inhibitory learning theory बोलते हैं. उसके basis पे explain होती है. ये मुश्किल था. Okay, we are already an hour and we have two more to go. I will get this last one as well. बीच में जो miss हो गया वो I will send it to you on the WhatsApp group. You can attempt it on your own and see if you can find a right answer. जाने से पहले पहले मुझे अगला टॉपिक बता दें किस क्या करना है आगे, फिर मैं आखिरी MCQ कराऊंगा. हाँ जी, next time if you are सर interested.
OCD के pathways और neurotransmitters. ओके, ओसीडी पाथवेज और सुफियान मुश्किल मुश्किल काम देता है मुझे एमसीक्यू बनाने में टाइम लगता है भाई। कोई आसान सा टॉपिक भी दो ना। टीचर को कोई दूसरा आसान दे देता। दूसरा आसान मेरा इम्तिहान ले रहे हो? अच्छा बोलो कौन सा करना है और सेकंड टॉपिक। एनीबडी एल्स वांट्स टू डू एनीथिंग एल्स? कोई भी नहीं इंटरेस्टेड हैं? आज बच्चे थोड़े हैं। क्या तो स्लीप मेडिसिन से रिलेटेड ये जो स्लीप स्लीप डिसऑर्डर्स के ऊपर जो क्वेश्चन है। ओके हो गया। स्लीप डिसऑर्डर एंड ओसीडी पाथवेज। नेक्स्ट टाइम इस पे एमसीक्यूज करेंगे। लास्ट एमसीक्यू, a patient with chronic PTSD and frequent distressing trauma related nightmares is prescribed prazosin. Prazosin is a very common drug here which is prescribed for PTSD having sleep issues. It's a very good sedative actually, prazosin mini press, and I'm surprised यहाँ पे psychiatrists बहुत लिखते हैं. The patient is cautioned about the first dose phenomena and instructed to take the medication only at bedtime. What is the pharmacological mechanism of prazosin in this context, and which side effect is the primary reason for specific dosing instruction? 1. It is the SSRI that increases serotonin levels in that synapse. First dose nausea. It is a GABA A agonist, provides immediate sedation to prevent awakening. First dose respiratory depression. It is an alpha 2 adrenergic receptor and inhibits presynaptic norepinephrine. First dose hypertensive crisis. It is a lipophilic alpha 1 adrenergic antagonist that crosses the blood brain barrier to reduce central noradrenergic hyperactivity. First dose orthostatic hypotension. It is a non-selective beta blocker that reduces peripheral sympathetic arousal. First dose bradycardia. क्या करेक्ट है? सो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजोसिन है क्या। The alpha 1 antagonist. Good. So it is a lipophilic alpha 1 adrenergic antagonist that crosses the blood-brain barrier to reduce central noradrenergic hyperactivity. First dose is orthostatic hypotension. Orthostatic hypotension is very intense and very severe. और जो psychiatrists prescribe करते हैं वो first dose is difficult and afterwards subsequently it is very good drug. It induces very good sleep and it calms down the people. I have no experience with it because हमारे पाकिस्तानी उसमें मिनी प्रेस या प्रेजोसिन नहीं प्रिस्क्राइब की जाती, बट ये की जाती है। ये सारे एमसीक्यूज आज मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? और आप सबको कोई और क्वेश्चन है तो बताएं। Anybody? No? No question? Okay. Okay, fine. I will post these MCQs, ये attempt कर लें, next Saturday को देख लें, अगर आना हो तो आ जाइएगा. I'll send more MCQs. Okay, Allah Hafiz, take care.